Assalamualaikum and welcome to another video of the spoken English language. Today we will be covering some parts of speech, यानी कि nouns, adjectives, etc. हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे. Let's talk about noun first. Now, what is a noun? A noun can be a person like a boy, or you can say my friend, or a person's name like John Doe, or anything like Ali Bhatti. This is a noun. It can also be an idea, a thing, or a place. A place like Pakistan, or a place like laundry, or you can say a room. So these are the things that defines noun. A noun can, you can say, basically play a role of subject, indirect, direct object, or an adjective also. आगे जाके हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे, but first of all, let's see what we have. We have some types of nouns. For example, a pronoun. Now, this pronoun is used instead of a noun. इस तरह से हम लोग इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे you have some sentences over here, and if I say Ali is my teacher, Ali told me to revise the course, Ali told me that this course is very helpful. यहाँ पे you can see that sentence structure is not, you can say, completely done, and it looks odd कि बार बार हम लोग एक नाम को repeat करी जा रहे हैं. How about we use a pronoun instead of the noun? Ali is my teacher. He told me to revise the course. He told me that this course is very helpful. And now you see the difference कि अब sentence structure भी बहुत complete हो गया है, and it looks better than repeating the name again and again. Okay. Next we have some personal pronouns. ये भी इस्तेमाल होंगे noun की जगह पे. Okay. For example, I, him, me, you, us, we, they, them. ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये हम लोग सेंटेंस के अंदर these are basically used in everyday life. आप सब लोग भी ये इस्तेमाल करते ही होंगे जब आप लोग कोई सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं, like he told me, or you can say that we are going over there. तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते थे Ali, Ehsan, Rauf are going to a party, or we can say we are going to a party, जिसके अंदर हम लोगों ने noun को replace किया pronoun के साथ. So this makes a sentence short as well as a good sentence structure. Next we have some demonstrative nouns. ये भी इसी तरह से हम लोग noun की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, like these, those, this, that. Can you pass me this thing, or can you pass me these something, anything like that. तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. Next we have some indefinite pronouns, and यहाँ पे this is used when something is not specifically identified. यानी कि as we have some example, anybody, everybody, one, or other. Let's have an example. Everybody is allowed to attend this class. अब यहाँ पे we are not specifically identifying everything or everyone, you can say. Let's suppose we have a class of 40 plus students. अब हम लोग हर एक student का नाम नहीं लिखेंगे. हम लोग यहाँ पे we can use everybody instead of writing each and every single name of a student. तो यहाँ से define क्या होगा, that everything is defined, or you can say that everybody is involved in this thing. जितने students हैं वो सब allowed है ये class लेने के लिए या ये class attend करने के लिए. Next we have interrogative pronouns. ये भी use होंगे हमारे पास noun को replace करने के लिए या उसकी जगह पे इस्तेमाल करने के लिए, like who, which, whose, and what. Like you can say that who is over there or who's there. ये अक्सर सेंटेंस आप लोग भी यूज़ करते होंगे, और दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंटेंस यूज्ड by the everyday life, you can say, or maybe the native speakers. हम लोग भी इसको यहाँ पे इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो.
Next we have some possessive pronouns like their, your, my, whose. ये भी हम लोग इस तरह possessive pronouns के अंदर इस्तेमाल करेंगे and once again used other than a noun. Let's talk about some possessive pronouns. Their, your, my, whose. Next we have some adjectives. Now, what is an adjective? A word that describes a noun, often used right before a noun. यानी कि कुछ आप इस तरह से एग्जाम्पल ले लें कि जब हम लोग नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउन के बिल्कुल पहले we will be using some adjective in order to make a good sentence structure. And we have some common rule जिस तरह से हम लोग adjective को use कर सकते हैं. These are the examples. I will just talk about it in a moment. Let me tell you why I have wrote these things. यानी कि मैंने इनको number wise क्यों लिखा हुआ है. I could have written origin first, I could have written material first, but I chose to write opinion first, then size, then physical quality. Why? Because this makes a complete sentence structure. हम लोगों ने इसी तरह से कोशिश करना है या sentence बनाना है. And let me tell you this thing that you guys will never be taught this thing. ये आप लोगों को अक्सर या जिस तरह जो लोग इंग्लिश frequently या fluently बोलते हैं, how do they master it? They just keep on speaking English and आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा या people never even you can say highlight this thing. But still ये लोग adjectives के साथ ही noun को इस्तेमाल करते हैं. And this is the complete or you can say the correct way to use as or maybe say a sentence structure. Just say number one is opinion. The opinion is that that thing is pretty or ugly. आप लोग उसको उस तरीके से define करेंगे. Second is size. Like is that a tall thing or a short thing? हम लोग इस तरह से size को define करेंगे. Next is physical quality. यानी कि उसकी quality किस तरह की है? Is it a clean thing? Is it a dirty thing? हम लोग उसको भी properly define करेंगे. Fourth is you can say shape. अब shape किस तरह की है? Is it a circular shape, round shape, rectangle shape, or what sort of shapes do we have more? Is square shape? ठीक है, हम लोगों ने उसकी shapes को define करना होगा. Next we have age. Now age is not like 21 years, 22 years. Age means के उसकी is it a new thing? Is it an old thing? Or is it you can say somehow used thing? वो किस तरह की चीज़ है या उसकी usage कितनी पुरानी हो चुकी है. Sixth part is color. Now color is you can say very example, very easy thing. Red color, yellow color, जो भी color है हम लोग obviously उसका वो भी define करेंगे. Seventh is the origin. Origin means कि वो कौन सी country से belong करता है. Is it a Pakistani or a thing? Is it does it belong to Pakistan? Is it a Chinese thing or you can say Indian for that matter? जैसे Indian foods होते हैं कुछ तो वो Indian thing है या पाकिस्तानी है, Chinese है, किस तरह का है. Eighth part is material. Now material means कि वो उसकी quality क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ है. What is it made of? Is it made of steel or is it made of ceramic or for that matter we can use maybe plastic. जिस तरह का भी material है हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे. Let's talk about all these parts in an example like my big black American SUV. Now big comes over here, यानी कि part 2 में आता है. Then comes black. Now black was what? The color. Color हमारे पास इस part में आ गया. Next we have the origin. मैंने origin use किया American या फिर पाकिस्तानी जिस तरह यहाँ पे मैंने आप लोगों को example बताई थी. And then finally comes the SUV. Like
I used all these things to combine one sentence, and now you can see that the sentence structure is complete. There is no problem in between all these, you can say, sentence, and it looks good. इसी तरीके से everyday life में, when you guys will be using the sentence, do not forget to add an adjective. I'll repeat again. Adjective is a word that describes a noun, and it is often used right before a noun. Okay? Next we have verbs. Verbs की भी कुछ types होती हैं, और इसमें हमारे पास कुछ action verbs हैं, ठीक है, just like running or walking. It defines the action, that what is happening. Are you running? Are you walking? Like, I am running, or you can say, I have a sentence, listen to me. Okay, now listen is an action verb. And one more example we can have, write what you hear. Write is an action verb, and then hear is an action verb. Okay, it defines the action. Then we have stative verbs, like you can say to think or to feel, कि आप किस तरह feel कर रहे हो, I'm not feeling well, or just like you're thinking something. तो ये हमारे पास stative verbs आ जाते हैं. Next we have, and this is a really important thing, modal verbs. यानी कि modal means, or you can say they are added to another verb to show some possibility, like can, could, must, might, or may, should, shall, would. यानी कि let's use it in a sentence. Can I have that bottle, or can I have that piece of paper, or should I call him? Okay, ये हमारे पास कुछ modal verbs आ जाते हैं. Now if you just have a look at all these bullet points, ये सब हमारे everyday use के words हैं, and we don't even pay attention to these words, and we just keep on saying all these words, and we build a good sentence structure. But at the back of the story, what is happening, that you are using a modal verb, or maybe this stative verbs or action verbs to just define whatever you are doing, or maybe complete a sentence. Okay, हम लोग इस तरह से everyday life में ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. But now what will happen कि जिस तरह से हम लोग ये सब चीज़ें, या हम सब ये lectures आप सब लोग पढ़ रहे हो, do not forget these things. Like whenever you are using should, you should remember that this is a modal verb. Next we have adverbs. Now adverbs are something that describes an adjective, another adverb, or maybe a complete sentence. Let's have a look in the example. I carefully lifted the table up. Now lifted over here is an adverb. Similarly, you can say he is more interested in learning than you. Interested यहाँ पे फिर से एक adverb use हुआ है. And finally, unfortunately, the food is finished. This word unfortunately defines the complete sentence. यहाँ पे इसने पूरे sentence को cover किया है. Unfortunately, the food is finished. This is how you can use adverbs, and you use adverbs, but you never thought of them that इसका back of the end हमारे पास story क्या है, या ये use किस तरह से हो रहे हैं. Next we have conjunctions. Now conjunctions are the words that connect clauses, words, or sentence together. Okay. Conjunctions की भी हमारे पास कुछ types हैं, जिसमें first of all we have coordinating conjunctions like and, for, nor, or, but, yet, and so. These are also used on daily basis. Like अगर आपने कोई sentence को join करना है तो you will be using and. For आप लोग किस वक्त इस्तेमाल कर रहे होगे,
जिस वक्त आपने कोई सी चीज़ को यू कैन से डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है. नॉर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर समथिंग. नो, हम आगे जाके इसको भी देखेंगे. Then or is also used for combining some sentences together. Then we have but, yet, and so. These are also used in everyday life. We have coordinating conjunctions as well. Now, what happens? Yeah, how do we use coordinating conjunctions? These are something that connects clauses, words, or sentence all together. Let's have a look at the example. We have two sentences. I was going on a tour with them. I stayed home because of my work. अब हमारे पास ये दो sentences हैं different. अगर हम लोगों ने इसको ज्वाइन करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो हम कंजंक्शन के थ्रू इसको किस तरीके से मिला सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक इन द एग्जांपल. आई वाज गोइंग ऑन अ टूर विद देम ओवर हियर, बट आई स्टेड होम बिकॉज ऑफ माई वर्क. अब बट यहाँ पे क्या काम कर रहा है? दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड दिस इज कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस इनटू वन कंप्लीट सेंटेंस. कि हम लोग इसको ग्रामेटिकली भी देख सकते हैं एंड दिस लुक्स गुड. एंड मोस्टली एक सेंटेंस में अगर हमारे पास काम पूरा या कंप्लीट हो जाता है, देन व्हाई शुड वी यूज टू सेंटेंसेस? ओके, सो यहाँ पे आई यूज्ड बट एंड देन आई कंबाइंड आई स्टेड होम बिकॉज ऑफ माई वर्क. Next we have correlative or correlative conjunctions. Now they are used together whenever using in a sentence. हमारे पास ये bullet points में neither लिखा हुआ है और nor लिखा हुआ है. ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं एक sentence में. Similarly either or. Whenever you will be using it, they will be a correlative conjunctions. For example, I want either bowling or wicket keeping. यानी कि मुझे या तो बॉलिंग करनी है या बॉलिंग चाहिए, या फिर मुझे विकेट कीपिंग चाहिए. इन दोनों में से कोई एक चीज़, और यू कैन से कि दैट पर्सन इज गिविंग ए चॉइस. आई वांट दिस थिंग, आई वांट दैट थिंग. अगर हम यहाँ पे नीदर और नॉर को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आ जाता आई वांट नीदर बॉलिंग और बॉलिंग नॉर विकेट कीपिंग. या कि इसका मतलब हुआ ना ही मुझे बॉलिंग करनी है ना ही मुझे विकेट कीपिंग करनी है. सो दैट मीन्स के पीछे हमारे पास व्हाट आर वी लेफ्ट विद? फील्डिंग एंड बैटिंग. ओके, सो इस तरीके से हम लोग कोरिलेटिव और कोरिलेटिव कंजंक्शंस को ज्वाइन करके इस्तेमाल कर रहे होंगे. सॉरी. नेक्स्ट वी हैव सबऑर्डिनेटिंग conjunctions. Now these are used to join common and independent conjunctions. जैसे since, as, although, because, while, whereas, and though. ये सब हमारे पास subordinating conjunctions हैं. Because is the most common subordinating conjunction, or you can say a word or a conjunction that is used on daily basis. I stayed home because I was ill. अब because यहाँ पे क्या काम कर रहा है? This is a subordinating conjunction and this is combining two sentences into one complete sentence. Then we have definite articles. Now it limits the meaning of the noun to one specific thing. जिसमें हमारे पास सबसे पहले word है the. आप लोग इससे पहले जितनी भी दफ़ा the इस्तेमाल कर रहे होंगे, you guys would have never thought that this can be a really important part of speech, and यहाँ पे this can be a definite article. यानी कि this defines, or maybe the word the defines that specific thing. वो उसको limit कर देता है, or maybe you can say वो define या specific कर देता है कि this is a very important thing. I could have said, give me a book, but that word or specifically a defines what? A common book, or maybe एक आपके सामने अगर book पड़ी हुई है तो give me a book or any book. But if I'm saying, give me the book, now I have limited this word the to the book, that this book is very important. That's why I have chosen
the. Similarly, you can say, let's go to the theme park. I could have said, let's go to a park. अब अगर हम यहाँ पे use करते, let's go to a park, the word a will be used in, you can say, a very common thing. जैसे कि एक normal सा park है, उसके अंदर हम लोगों ने जाना है. But when I said the, this meant that this thing is important and I chose to write theme park. So यहाँ पे हमारे पास मेन कॉमन डेफिनेशन क्या है, ये डिफाइन क्या हो रहा है कि थीम पार्क इज अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वी आर गोइंग ओवर देयर और वी आर प्लानिंग टू गो ओवर देयर. ओके, नेक्स्ट वी हैव द इनडेफिनिट आर्टिकल्स. इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स कि हमारे पास ये भी इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ द नाउन टू वन स्पेसिफिक थिंग. और यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में है अ और एन. नाउ अ इज यूज्ड इन अ नॉर्मल सेंटेंस, बट यू गाइज नो एन कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ पे वावल आ रहा होता है. यहाँ से मुझे एक और चीज़ याद आई. आई हैड सम क्यूरी ऑफ अ स्टूडेंट विच वाज अ रियली गुड क्वेश्चन. ही वाज आस्किंग और ही और शी वाज आस्किंग दैट जिस तरह एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, इट स्टार्ट्स विद यू एंड यू इज अ वॉवल, बट वहाँ पे हम लोग एन नहीं लगाते हैं. वी कुड से दैट वी आर गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे एन क्यों नहीं आता है. ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग वी कैन यूज ए, बट नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स. सिमिलरली देयर इज अ वर्ड ऑनेस्ट, HONEST. ठीक है, नाउ वी यूज एन ऑनेस्ट. ठीक है, हम लोग एन यूज करते हैं ऑनेस्ट से ऑनेस्ट के बिल्कुल पहले. बट इफ यू गाइज जस्ट पे अटेंशन टू दिस थिंग दैट एच इज नॉट अ वॉवल. वॉवल हमारे पास कितने हैं, AEIOU. ठीक है, वी हैव 5 वॉवल्स, बट एच इज नॉट अ वॉवल, बट इट इज बीइंग प्रोनाउंस्ड एज के ये ओ लगता है, ऑनेस्ट. Right? It looks like or it seems like that I am spelling something like ONEST, honest person. But हमारे पास H उससे पहले आता है. H is obviously silent, but we will be using an before honest. He is an honest person. तो यहाँ पे कुछ इस तरह के sentences होते हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे पास, और उसमें हम लोग एन यूज़ कर रहे होते हैं. कुछ हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो वॉवल से तो स्टार्ट होते हैं, बट वी यूज़ अ और ए बिफोर दैट वर्ड. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, कैन यू गिव मी एन ऑरेंज. अब एन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि मुझे ऑरेंज चाहिए, एंड इट विल बी यूज ऑब्वियसली ओवर हियर, बट इट इज़ एन इनडेफिनिट आर्टिकल. यहाँ पे कोई 100% स्पेसिफिकली या जिस तरह कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसको डिफाइन नहीं करेगा. ओके, ये हमारे पास कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ स्पीच which is the prepositions. We have covered complete prepositions in our previous lecture, इस वजह से I didn't add over here, but I'll just give you a brief overview of that. कि prepositions, some people say, and this is a very big controversy, that people say that prepositions के साथ word को end नहीं करना चाहिए या sentence को end नहीं करना चाहिए. But I disagree to this thing, and mostly the you can say scholars also disagree that it looks good, the sentence looks very good when you end it with the preposition. ठीक है, तो अगर आप लोग जिस वक्त सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू एंड इट विद द preposition, you guys can. There is no problem in ending something with the preposition. Okay, so this is the part of speech. These are the part of speech जो हम लोग everyday life में इस्तेमाल करते हैं, but we never thought of it कि ये हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं. So what we covered today was nouns, कि हम लोग noun को किस तरह इस्तेमाल करते हैं. What is a noun? A noun is a person, an idea, a thing, a place, और उसको हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे होंगे. noun की कुछ types हैं, या आप कह सकते हो कि pronoun. What a pronoun is, this is used instead of a noun.
Ali is my teacher. बार बार नाम यानी कि नाम, name is a noun. Name को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय we will be using a pronoun. A pronoun gives a good sentence structure look and it doesn't feel like a grammatical problem. If I would have used this name again and again, then we could have a sentence structure problem as well. Okay? And then we have some personal pronouns. Personal pronouns के भी हम लोग use कर रहे होते हैं I, him, me. And similarly, we have some demonstrative nouns, these, those, this, and that. This is also used in everyday life. Sentence structure, हम लोग sentence को build करने के लिए भी ये use कर रहे होते हैं. Then we have some indefinite pronouns, anybody, everybody, one, and other. यहाँ पे this is used when something is not to be specifically identified. जैसे मैंने आप लोगों को एक स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी थी कि अगर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अब चले क्रिकेट की बात, अभी मैंने आगे क्रिकेट की एग्जांपल दी थी, हम लोग वो भी कर देते हैं कि क्रिकेट के अंदर भी अगर आप लोगों ने कुछ इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है तो यू गाइस कैन मेक हाउ. हम लोग 11 प्लेयर्स को नेम नहीं करेंगे, हम लोग एवरीबडी कह सकते हैं. ठीक है. Then we have interrogative pronouns, who, whose, which, and what. जैसे कि interrogative basically means this comes from interrogation, यानी कि question करना किसी को, वो उसको कहते हैं interrogation. तो who, which ये भी question है हमारे पास. And you guys must have noticed and you guys must have used as well कि who अगर आ रहा होता है तो who के बाद हमारे पास एक question mark आ रहा होता है. Okay. Next is the possessive nouns. Then we have, this is repeated, adjectives. Now adjectives के ऊपर I'll just repeat again that this is really important. Why? Because adjectives, you can say, combines the sentence and it makes the sentence look good, and you can short the sentence using the adjectives as well. Next are the verbs, action verbs, stative verbs, modal verbs, then adverbs. We have adverbs हमारे पास क्या करता है, which describes an adjective. It is an other adverb, or maybe it describes a complete sentence. Then we have some conjunctions. Conjunctions are the short words, short letter words जो हम लोग everyday life में इस्तेमाल कर रहे होते हैं for the combining of the two words, two sentences, you can say, not words. कि अगर हमने दो sentence को combine करना है तो उसके लिए हम लोग but इस्तेमाल कर रहे होंगे. Similarly, we have and, for, yet. These are the most common conjunctions used. Then correlative conjunctions. ये sorry. This I'll repeat again. Correlative conjunctions हमेशा इकट्ठे इस्तेमाल होंगे. They will be used in a pair. Neither nor, either or. Then subordinating conjunctions, then the articles, and then the indefinite articles. Okay. These are the parts of speech, and don't forget the prepositions as well. Keep on repeating this, keep on practicing, and you can use it in everyday words. आप लोग अगर कोई conversation कर रहे हैं आपस में, try to use the adjectives as much as you guys can. Okay. See you next time, inshallah, with next video. Till then, take care. Thank you.